Okay, guys. So in this session, I'll be showing you how we are going to set up a lab. Okay, and what would be the requirement to setting up this lab, and uh, means how to access Palo Alto Firewall, GUI, and CLI. Everything we are going to cover this. Okay, so let's start. So you just need this software, VMware, or VirtualBox, or any other software which can open this .ova file. Okay. If you don't have this software, I'll provide you, not an issue. And this is the OVA file. This is means a virtual image, I would say. Okay. So you have to open this file into this VMware. Okay. Now how you do that? If you double click on it, it will by default go and open it to this VMware. Okay, this is one way. Or you can do one thing, you can click on open and you can locate that file. Let me copy that path. Okay, let's say this is the file. Okay, this is my Palo Alto virtual machine. Okay, open it now. Okay, now give it a name. So let's say Palo Alto VM ESX evening class. Okay, and then click on import. That's it. Okay, once you do that, it will take some time, around 4 to 5 minutes to get imported. Okay, and now if I talk about what is the minimum requirement. So if you have laptop with the 8 GB RAM, that would be enough to run this OVA file. The Okay, person who have only 4 GB RAM in their laptop, it's in that case, it will not run. okay. Okay, because I don't have any extra server where I have hosted the EVNG or something like that. Because if I run this image on 4 GB, then how you are going to run your Windows machine? Because that also consumes some kind of RAM, right? So Okay. yeah, it will take 5.5 GB. Rest of the memory That means would it be is taken by mandatory 8 GB RAM. correct. If Okay. you want to perform practical, yes, that is the requirement. If you want, you can upgrade your PC, right, or laptop. It just takes I think 1500 or maybe 2000, not more than that. Okay, and that upgrade would be very helpful for you in future as well. You can run lots of OV images, not only this Palo Alto. You have lots of things to learn. Okay, because there is one more option, the cloud option. But if you have मेरा क्वेश्चन है कि 8 हम्म, जीबी इसके लिए रिक्वायरमेंट है, दैट मींस योर नहीं रैम आपकी 16 जीबी होनी चाहिए कि ये नहीं, नहीं नहीं इसको Palo Alto फायरवॉल को सिर्फ 5.5 GB चाहिए। 5.5 जीबी चाहिए। यस, ओके तो आपका लैपटॉप 8 GB चाहिए, सो दैट ये 5.5 GB की फाइल को रन कर लेगा। जो रिमेनिंग मेमोरी बचेगी, ढाई हाँ तीन हाँ MB, वो आपका उससे क्या विंडोज चलेगी। ओके ओके तो ओके ये स्मूथ चलेगा 8 GB में। ठीक। ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट है। एंड ओके, सो इसका वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर इट, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ okay, so guys, if I talk about this OVA file which I am importing right now, uh, that is not the license one. First thing, okay, that is not the license one. It means that you can enable the features, you can perform configurations, but you know uh, uh, if I give you a scenario,
let's say you want to forward traffic through the firewall. You cannot do that because this is a demo firewall, and for that you need to purchase a license. And even if you want to get a trial license, which is really not possible in case of Palo Alto firewall, because you need to contact their sales team and then they will provide you a 30 days or 45 days or 60 days license. That is a trial license that would be okay. So it is not like that, like FortiGate providing you trial license on their website, but on Palo Alto it is not the case. Okay, this is not the case. In Palo Alto you need to contact their sales team and you need to provide your company details and everything. After that they will give you the trial license. वो कुछ charges भी they want some charges for No, that. no. For trial license there is no charges, but yes, again, they will not give you license to enable all the features. Like there are some features like app ID, right? URL filtering, you can do that. But the features like VPN, you cannot enable those features on trial license. Okay, so this Oh, is one way. Okay, now the next thing is, so with this firewall, what we can do is, there are three things. Okay, implementation means configuration we can perform, we can create policies. Okay, even I will show you how this policy is matching and all. I'll show you hit counts. If you see hit counts, you will automatically understand that this policy is getting matched. Okay, so I know few scenarios. Through that I'll explain you how does it works and all. Okay, but in real time, like in real time you have seen logs, which is not possible with this firewall. Like if you want to perform packet capture, which is not possible with this firewall because there is no traffic going through this firewall. That is why we are not able to capture any kind of traffic. But yes, definitely I'll let you know all the steps, how you are going to capture the packet, and what is the scenario, how you are going to filter the traffic and all, how you are going to check the logs, because these are some real-time requirements, right? These are your real-time requirements, because in real-time requirements, uh, maybe you are part of implementation team, maybe you are not, but most of the people will not directly go for implementation team. You will find a firewall which is already running in your network, right? So you need to troubleshoot issues on which is coming on through the tickets, right? Which is coming day-to-day basis, right? So to those scenarios, we need to understand how this works, how this feature works, and what all are the options are there. Okay, so we can perform everything, each and everything with this demonstration firewall. Okay, now, so now our firewall got imported. Okay, if I click on this edit virtual machine, you can see that by default all three adapters are bridge. Okay, so let's not change anything here as of now. Okay, now processor by default it is 2, memory by default 5.5 GB. So you don't have to make any changes. Simply go ahead and power on this virtual machine. Okay, because this is your first time, you are booting up this firewall for first time, so it may take longer time. Okay, so again, 5 minutes, maybe 7 minutes, or maybe more than that. It totally depends upon RAM. Okay, generally I don't change the RAM. Okay, which is 5.5 GB. Even my PC has 16 GB RAM, but still I go with the same RAM. Okay, now meanwhile it is booting, let us talk about few more things. I'll show you how we are going to access the GUI, how we are going to set up the management interface IP address. We'll talk about this today. Okay, so yeah, one more thing. If you are going with this course, I have some class notes. Okay, so I'm updating these notes. So
these are the nodes according to the days, but I'm still updating those nodes. Okay, so I'll provide you these all nodes if you want with this course. And we have some lab workbooks as well. Here it is. Okay, let me show you the first one. This one. Okay. So initial configuration. Okay, so this is your lab workbook. Okay, so in initial configuration means how you are going to set up a management IP address. Okay, now you can see that by default the firewall has an IP address 192.168.1.1. It means if you get a if you bought a new device, fresh firewall box, physical box, okay, you will get this IP on your management interface. So when you plug your console cable with your PC and you connect with the firewall, you have to put this IP on your browser to take the access. Okay, but in our case we are using virtual machine. Okay, so in that case there are some other options. Either we can change it manually, or when you power on this firewall, it will automatically take one IP address. As of now, it is still in booting phase. Okay, in background, it is running their services. Okay, so once everything goes fine, it will automatically get one IP from DHCP. So who is my DHCP? Basically, I am connected with this Wi-Fi network. Okay, so this is my Wi-Fi modem. If I show you this IP address, so this is my IP address 192.168.29.113. I got this IP from DHCP from my GeoFiber modem. Okay, so as we made all the adapters as a bridge means it will take the IP address from my Wi-Fi adapter only. It will request my broadband modem to get the IP address, and it will get the IP address. I'll show you once we get the IP address. As of now, it is still booting. It is showing login, but if you put username, admin, and password as an admin, it says login incorrect because the firewall is still booting up. So let's wait for 4-5 more minutes. Okay, and then we'll come back to this and we'll log in this. Okay, meanwhile, let's talk about these lab nodes. Okay, now how these lab nodes are useful. You need to put username admin, password admin. Okay, let's say you want to see the interface, management interface IP. So you need to run this command, show interface management. Okay, now once you put this command, you would be able to see this screenshot. In this screenshot, you can see that here is the management IP address, which is 192.168.1.1. Here it is. Okay, and this is your subnet mask. Default gateway is not set. IPv6 address and all. Okay, port MAC address. Okay, everything is there. I'll show you live scenario as well. Now, change your management IP according to topology. Okay, go to configuration mode. This is the step-by-step process. Once you log in the firewall, first you will get this prompt. Okay, and now in this prompt you can run the command, but you cannot configure, you cannot change the IP address, management IP address basically. So first you need to type this command configure, and then you have gone to configuration mode, which is this hash. Now you need to run this command, set device config system IP address. This is the IP address and this is the mask. Okay, you need to put this command. I'll show you everything now. Verify. For verify, you need to put this run keyword because you are in configuration mode, and then you need to run this command, show interface management. Once you do that, you can see that the IP address is now updated 192.168.10.100. Okay.
So now here the ping command is ping host. After the ping, you need to put host keyword. Then you need to put the IP. It is not same like Cisco and other devices. Okay. And one more thing, guys, your firewall, this Palo Alto firewall is XML based firewall. XML based firewall. This is not a Linux based firewall. It means because in most of the firewall you would be able to run few of the Linux commands, but in this firewall this is not the case. Okay, this is XML based firewall. It means you are not able to run any Linux command on this firewall. And I would say this is the advantage, because other competitors and other devices are based on Linux, right? Which is open source. Okay, so guys, you can see that we have got one IP from DHCP 192.168.2.9.126. Okay, if we want, we can access the GUI with this IP as well, and if we want to change it, we can change it. So let me show you with this IP, then we'll change it. Okay, so now you need to put HTTPS first, 192.168.2.9.126. Okay, now you will get this certificate error. So click on advanced, proceed and save. Now you need to log in with the credentials. The username is admin and the password is admin. Hit OK. Warning, your device is still configured with default admin account credentials. Okay, click OK. Okay, so this is our dashboard. This is our firewall dashboard. Okay, let's not start with this dashboard first. Okay, let us go ahead and use the CLI. You can see that here we have two CPUs, management CPU and data print CPU. I'll show you the architecture as well today. Okay, we'll take any firewall, any model of firewall, and we'll discuss the architecture as well. Okay, so now let's move to this CLI and let us try to change the management IP address. Okay, so now you need to log in admin and admin. Now we are able to log in through CLI as well. Okay. Sorry. So the first command is show interface management. Again, you can use tab key to complete the command, very similar to your Cisco devices. Okay, and hit enter. So now you can see that here's the IP address, net mask, and default gateway, which we got up from our DHCP server. Right now, so CLI, I'm telling you how to change this management IP address to CLI. Okay, now space. Okay, now the command that you need to put first, you need to go to configure mode. Configure is the command, hit enter. Now you are in configure mode. Okay, now the command is set device config system IP hyphen address. Okay, then I would say you need to run this command first, system type, then for help you need to put question mark, same like Cisco. Once you put question mark, it will suggest you some commands. Okay, now you can see that, guys, as of now it is DHCP client. See, DHCP client option is selected. So we want to configure it statically. So we need to
run this command first. So this is the first command, set device config system type static, and enter. Okay, once you do that, after that you are going to put your IP. So now the next command is set device config system IP hyphen address. Okay, let me okay. So what would be the IP? 192.168.29. Let me make it 111. Okay, and then mask. Sorry, we call it net mask 0 space default gateway, not 1 space. If you want to provide DNS, let me put question mark. If you want to provide, if you want to update the DNS servers detail, you can change it from here as well. So here it is, DNS setting, and then put question mark servers primary. Okay, and then you need to put primary DNS primary server IP address. If you want, you can do that through CLI. Otherwise, let me not do that right now. Okay, so this command is enough for us, which says set device config system IP address. This is the IP address 29.111, and then after that net mask, and then default gateway. So this is our final command. Hi Manish, all the commands that you have entered all in are there notes? Notes में available होगा Yes, ये? yes, yes, yes. Okay, okay. Yes, it is there. Okay. Okay. Apart from that, you will also get recorded session, so you don't need to worry about it if you forgot this command. Okay. Enter. Now we are done with that. Okay. Now let me go to my GUI and let me try to browse with the new IP address. And let us see if we can do one more thing. We can try to ping this IP address space -t. Okay, it is not getting reloaded. Okay, now let me tell you the reason behind that. Okay, so the reason behind that is whatever the configuration you are doing here, it is not a live configuration. Like in Cisco devices, you have configured interface and it goes live quickly without uh, without saving the changes, right? But in Palo Alto, in case of Palo Alto, this is not the case. Now you need to save this setting first. So if I show you the run show interface management, now still you can see that it has old IP 192.168.29.126. Why? Because you need to save the changes first. Commit, enter. So whatever the changes we make in this firewall, we always need to hit on commit. Uh, we need to put this command commit. Now run show interface management 192.168.29.111, and you can see that we are getting reply as well. Okay, we got access with this new IP. Log into your firewall.
Okay. So this is our dashboard. Okay. So now we have successfully changed the management IP address. Okay. So this is CLI way now. And if I talk about GUI way, go to devices, go to setup, go to interfaces. Under interface, you only have one interface, management interface. Under management interface, you can see that this is your IP address, right? You can also change it from here. Okay, let me show you. Let me not change this right now. Okay, we'll do another change on this firewall. Okay, if you want to get from DHCP, select this DHCP client, and it will automatically get the IP address from DHCP. Now, in this firewall, you can see these are administrative management services, right? So how you want to access the firewall through HTTPS, Am I SSH? audible? Yes, 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 Chandrakant. Yeah. Question is, this firewall is a virtual firewall, or Yes, this is virtual firewall. the second question is, you are setting that IP on DHCP in the sense you installed a DHCP server anywhere, or it is taking automatically from internet? It is taking automatically from my home broadband modem because Oh, okay. yeah, because we made all these interfaces as a bridge. If you remember, all interfaces are bridge. Bridge means if you have lots of network adapters. In my case, I have lots of network adapters. Let me show you. So I have lots of network adapters. So bridge means bridge going to merge all the network adapters so that they can talk to each other. That is why we have got this IP address from my Wi-Fi. Because on this Wi-Fi as well, I am getting this 29 series of IP, right? So guys, if you connect your laptop with a mobile hotspot, so you will get the IP address from there, from your mobile hotspot. Okay. When we connect Wi-Fi router, multiple devices will get accordingly. I mean, depends Yes. on DHCP, they will get IP addresses. Okay. Yes. If this is not connected with this Wi-Fi, in that case, you will not get any IP from DHCP, and you will not get any IP. Yeah, we don't get internet also. Yeah. Yes. Yes. Okay. So you can enable HTTP, HTTPS, SSH, Telnet on management interface from here as well. Okay, click OK. Now moving to dashboard. On dashboard, we have so many information for this device. You can see that device name. This is your host name, right? On CLI, you can see that. Admin is the username @PA-VM. This is your host name, PA-VM. Okay. It shows your management IP address, subnet mask, management default gateway. Okay. And this is your software version. Okay. Application version, URL filtering version is 000 because we don't have any license. Okay. This is the time of your firewall. This is the uptime. And one more thing, you are running a VMware ESXi firewall. So this is a virtual firewall. This is model number. You can see that Palo Alto virtual machine. So that's a virtual firewall. You can deploy this firewall into cloud.
Okay, you can deploy this firewall to cloud as well. Architecture, I'll discuss about the architecture later on. Okay, now these are some logs. Okay, logged in admins. So we have logged in through admin, through CLI as well. This time, and with this IP, this is my system IP address, right? Laptop IP address. These all are the things. Now, let me show you a few more things. So this dashboard you can manage according to your requirement. You can add few more things like top applications. This one, interfaces. As of now, all interfaces are grayed out because interfaces are we have not configured any interface. Okay, HA tab, threat logs, URL filtering logs. So you can manage this dashboard. Okay, according to your requirement. We can change it. Okay. Now go back to device, go to setup. Let me tell you a few basic things on this firewall. So these are general settings. Okay. So guys, if I take you through this firewall, you will get so many options on the left hand side. Okay. So this is for device management. Like this is your license tab. Okay. So from here you can activate your firewall license. Okay. Software tab. This is for software upgrade. Let's say you want to upgrade your firewall, you can upgrade it from here. Okay, certificate management, SSL TLS profiles, TACAX radius. Okay, for authentication, go to network tab. Interfaces, we have total 9 interfaces in this tab. Sorry, in this firewall. VLAN we can create, we can add VLAN, and VLAN number you need to put like 100. Okay, and then virtual router security zone, everything we are going to discuss about it. Tunnel, this is the tunnel configuration. Okay, tunnel interface, which is totally separate. Okay, loopback adapter you can create, everything is there in this firewall. Left hand side you have zones, you can create zones, inside zone, outside zone, DMZ zone. VLANs you can create, virtual router, IPsec tunnel, GRE tunnel, LLDP, IK gateways, IPsec crypto, IK crypto. Okay, means from here you can see that we can, if anyone has knowledge about IPsec tunnel, you can see that we have all the algorithms, right? Hashing algorithms. So what is encryption algorithm, authentication algorithm? You can provide Diffie Hellman group number. This is tunnel lifetime, means after how many hours your tunnel get reset. Okay. So there are so many, everything is there. Zone protection profile, we generally create to prevent ourselves from flood protection. Zone protection profile. So it will protect your outside zone. Maybe yesterday we were talking about this, right? DDoS attack. So SYN. So you can change these rates. Okay, we'll discuss about everything, like what is activation rate, what is maximum, what is alarm rate. Okay, apart from that you will get some port scan alerts and all. There are lots of things to prevent from attacks on this firewall. Okay, now go back to objects tab. If I give you a brief idea about this tab, in this tab you have this application database. This firewall has as of now 2007-5 application already listed. Okay, so we can add our application as well. Okay, let's say my company has made a new software, so we can add that application as well, because this is layer 7 firewall, right? So we can allow or deny a particular application by creating this application filter, application groups.
Okay. Services means port number. Okay. Address is object. We'll talk about every tab. Okay. And these are security profile, which is if you because few of the people know this as a IPS or IDS. So this is the IPS and IDS section. This is your DOS protection profile. You need to create this profile and you need to put this profile to your outside interface or outside zone. Okay, you can configure it. Now URL filtering profile, you can create it from here. This is the default one. Okay, anti-spyware, anti-virus decryption profile, because this firewall performs SSL decryption. So you can create a decryption profile by your own. Okay, SSL inbound inspection, SSL protocol settings and all. Now, policy tab. So I'm going a bit faster because we'll talk about each and every tab in detail. Okay, because this is PCNSE, right? It means we are almost touching each and every tab during this course. Okay. Now policies, under policy you can create security policy for net. One more question, Manish. Hmm. In this Palo Alto firewall, this version is upgraded one. I mean, updated No. firewall, or there are many versions are there where we No, this is 9.00. Okay. The latest one recently the Palo Alto has launched is 11. 11. Okay. Yes, Okay. 11. Yeah. So I mean that in the sense how in how many time gap it launches new firewall? No idea. It No, totally in the depends sense, why upon I'm asking this question, because if we learn this firewall and tomorrow another firewall comes in the market, then another firewall means this vendor or another vendor. this vendor only. If this is the vendor, then they will not make major changes. Okay. Right? They will not, because if I show you the dashboard for this is 9.0 firewall, right? If I show you the dashboard for 11.00, चेंजेस कुछ ज्यादा हुए हैं? हाउ मेनी नहीं चेंजेस नहीं आर नहीं देयर अबाउट टू हैव? नहीं होते, इतने ज्यादा नहीं होते यार, देखो। नहीं होते हैं तो that is okay, but the हाँ question नहीं, is 10-11 पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका, तो मैं okay. तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट देख, तुम अपना भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। वर्जन मैंने लास्ट काम किया था 10 पॉइंट, क्योंकि 11 अभी लाइव नहीं हुआ है शायद इनका, अगर हो गया होगा तो फिर वो -1 में अपग्रेड करते हैं यार फायरवॉल। देखो थोड़ा डैशबोर्ड इस तरह का ये दिखेगा आपको, ये वीडियो प्ले करता हूँ किसका है ये, ठीक है, ये वाला, ये भी तुम्हें इमेज चाहिए तो मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है, बट रैम कंजप्शन ज्यादा होगा, अगर रैम है आपके पास देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये रन कर सकते हो, ये वाली इमेज भी दे दूंगा मैं तुमको चाहिए तो। Okay, because Actually, the question is ki there are many changes or there are less changes. no. If I talk about these tab wise, you will not see any changes. Okay, you will not see any changes on these tabs. But maybe yes, 1-2 option these are the new option. You can see that the dashboard here and here it is almost same. Okay, then in general, what will be the changes happens in between the other vendor and this vendor in firewalls? Just terminology or blue diagram also changes? Architecture. Architecture. Yes. Architecture in the sense the port numbers and other things will change? No. Architecture in the sense thoda ek do line mein? Architecture in the sense means how your firewall process the packet. Okay. मीन्स हार्डवेयर वाइज कैसे प्रोसेस करेगा, अंदर आपका हार्डवेयर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो कैसे मैनेज करेगा ट्रैफिक को, या कैसे प्रोसेस करेगा पॉलिसीज को, ठीक है। So process in the sense in that OSI 7 हाँ layer, how that packet converts into one into another layer.
all that? No. This is done by your desktop machine as well. Right? You are sending and receiving through your mobile phone. It means your mobile phone also following OSI model. Yes, yes, yes. Right? तो ये कहाँ पे आर्किटेक्चर चेंज होता है? हाँ, आर्किटेक्चर देखो, अंदर जो इसका हार्डवेयर होता है ना अंदर, ठीक है, उसके आईसीज के अंदर इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं. सॉफ्टवेयर वाइज भी ये बग फिक्स करते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि इनके बग्स डेफिनेटली रहते ही रहते हैं. क्योंकि मैंने लाइव एनवायरनमेंट में काम किया इसलिए बता रहा हूँ ये भी. ठीक है, तो इनके बग्स तो वगैरह जब सब भी रहते हैं. वो जो चेंजेस और रिलीज आती हैं वो पैचेस करते हैं, हाँ तभी हाँ, वो बग वो करते जाते हैं. हैं, देखो, हाँ जाते हैं. मोस्ट ऑफ द मतलब मैक्सिमम चीजें हो जाती हैं उससे फिक्स, बग से. वो भी फिर टैग केस रेज करोगे आप, उसके बाद में वो सब होता है, पैच वगैरह अपग्रेड करना. ठीक है, देखो इसमें और इसमें ना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. सिर्फ ऊपर का एक थोड़ा सा लोगो और ब्राइटनेस है, ये सब अच्छा लग रहा है. अगर आपको ये चाहिए मैं दे दूंगा, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, और मे भी यहीं कहीं होगा, मेरे को देखना पड़ेगा. बट मैं क्या प्रेफर नहीं करता उसको. चाहिए का क्वेश्चन नहीं है. वंस हाँ वी लर्न दैट थिंग विल आस्क हाँ, यू. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. यू कैन Just means even after the course, if you come after 6 months and you tell me that sir this is the question, I'll help you with that, no worries. Okay. नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बना दो स्टूडेंट को, मतलब. हाँ, तो Yeah, but you know in IT industry, things are keep on changing, right? In every 1 or 2 year you will get new technology. yes. Yeah, The things are changes rapidly. rapidly, correct. So this is the case. But don't worry, if you want anything, do let me know. Definitely, I'll give you knowledge on that as well. After completing the once we get the project on a live basis, तो वो changes हमें महसूस हो जाएंगे कि we नहीं learn on होंगे. 9.1 or we currently work on 11 No, version. तो no, no. no. I would say no, because I also worked on a version 10, because 11, I think Palo Alto 11 is not live as of now. But yes, they have introduced their version. Okay, and generally in office environment, we are not using the latest softwares or latest upgrades, right? Which is already always -1. I've seen in my environment, I've seen so many firewalls which is running on 6 version 6 as well, version 7 as well, and the client is saying don't upgrade my firewall because everything going fine. So sometimes this is also the case. That is true. That is true. Yeah. That is true. But whatever we are learning, we should learn the The updated latest one, correct. updated No, skills. that is right. But as of now, I would say this 9 version is not out of dated. So fine. Okay, from my understanding, I'll provide you latest image if you want. I don't have any issue. Okay, but this run is smoother and fine for me. That's why I'm using this. Okay, and I'll try to import that one as well if you want. आपके मशीन का टास्क मैनेजर बताइए एक बार. हाउ मच रैम इट इज कंज्यूमिंग? It will not consume more than 5.5. एक मिनट. This is your VMware. Oh, very less. Okay. छोटे मोटे लैपटॉप में भी चला सकते हैं इसको. See, when you hit this commit button, at that time it will process, it will take the CPU, it will spike the CPU. You can see that as of now it is only taking 8% because you are not. Currently it is in a deep mode. When you once click, तो जब वो run होगा तो it's consume more. Correct. Okay. जब आप क्या बोलते हैं, कमिट कर रहे हो चेंजेस, उस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, ये इसी फायरवॉल में नहीं, ये हर फायरवॉल में. तो अभी ये मेरे ख्याल से स्लीप मोड पे चल रहा है. स्लिप मोड में नहीं है, काइंड ऑफ. जैसे देखो अभी हमने थोड़ा डैशबोर्ड वगैरह की यूजेस आप ओपन ज्यादा किया. नहीं कर रहे हो तो अभी हाँ, कुछ. तो हाँ प्लस देयर इज नो लाइव ट्रैफिक गोइंग ऑन थ्रू दिस लाइव फायरवॉल, ट्रैफिक. तो भी नहीं है. ठीक है,
इसलिए इतना इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट वहां पे क्या है, अगर आप 5.5 GB से कम कर दोगे तो ये इसमें बूट होने में शायद मुझे लगता है। अपन अपन अभी ये सीखते तो इसमें क्या क्या लैब में क्या क्या चीजें करते हैं, लैब में क्या करेंगे अपन? देखो लैब में ना ऑलमोस्ट ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, सॉरी, ये जितने सारे ये पॉइंट्स है ना, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हम हिट करने वाले हैं इन तीनों चारों पांचों टैब्स में से। एंड कुछ रियल सिनेरियोस काइंड ऑफ थिंग्स? बिल्कुल, रियल सिनेरियोज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन जो रहती है तुम्हारी, वो उसी टाइम, लेट्स से हम आज डिस्कस कर रहे हैं नेट पैट को, या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं DMZ सर्वर्स को, तो वहीं पे मैं क्या करता हूँ, ऑन द स्पॉट आपको ये बता देता हूँ भाई, इंटरव्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बिकॉज पालो अल्टो फायरवॉल पे मैंने काफी इंटरव्यू दिए हैं पर्सनली, अपने लिए काफी इंटरव्यू फेस किए हैं, तो उसका मिलेगा। प्लस इंटरनेट पे आप देखोगे तो इंटरनेट पे तो देखो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये रहेगा। जैसे ऐप आईडी है, तो ऐप आईडी में मैं बता दूंगा कि क्या पूछ सकता है ऐप आईडी के अंदर। जैसे SSL है, SSL डिक्रिप्शन, SSL हैंडशेक, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूज फॉर द लाइनेक्स। तो ये एक्सटीरियर प्रोटोकॉल में भी होता है ना, क्या चीज SSL? बीजीपी उसमें हाँ, BGP वहां में पे भी क्या होता SSL? हाँ, मे बी होता हो, बट क्लियर। BGP के अंदर SSL का कंसेप्ट कोई मैंने सुना नहीं आज तक, सच बताऊं तो। नहीं नहीं, मैंने कहीं तो सुना है, सॉरी बट अच्छा, नॉट अच्छा, गेटिंग करेक्ट। ओके ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ना मतलब, क्योंकि एक PCNSE लेवल है प्लस ये सिलेबस है, ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा अपने पास आता है तो आई एट दैट पॉइंट हियर, ओके, सो दैट क्या है, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब इतना ये है कि यार इतना पढ़ लोगे कि इंटरव्यू फेस करने में डर नहीं लगेगा, ये मुझे पता है, बट आपके थोड़े से बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। CCNA तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है। CCNA का सर्टिफिकेशन होना चाहिए था। नहीं 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 कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में, बट हाँ उसमें थोड़ा वो सबनेटिंग में वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। हाँ, तो देखो पता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट नेट टुडे, ओके, एंड यू से दैट सर कैन यू रिपीट नेट फ्रॉम, मतलब CCNA के प्रोस्पेक्टिव से, तो ठीक है, उसको अपन एक ओवरव्यू में ले सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग, हमें रिव्यू करना पड़ता है उसको भी, राइट, उसके बाद ही हम आगे उसको समझ सकते हैं, तो वो इतना चलता है यार, उसमें कुछ नहीं होता। बट हाँ, स्पून फीडिंग वाली बात पॉसिबल नहीं है ना, ये है। बट अगर आप एफर्ट करते हो तो डेफिनेटली देखो रिजल्ट भी मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो ये सारा यार आपका, ये सारे ऑलमोस्ट अपन सारे ऑप्शन हिट करेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स, ओके। We'll talk about how we use dashboard, ये वो everything, plus there would be troubleshooting session at the end of this course. So there would be 2 classes or 2 days troubleshooting session which I am going to give you for free, okay. उस troubleshooting session में क्या रहता है, एक Palo Alto का आता है EDU 330, ठीक है। EDU 330 का अगर तुम्हें सिलेबस दिखाता हूँ तो ये पूरा troubleshooting based है, पूरा कोर्स, ये पूरा एक कोर्स है EDU 330। तो अगर इसको मैं ओपन करूं, तो जनरली क्या होता है, कॉर्पोरेट में जैसे कंपनीज में जो ट्रेनिंग मिलती है ना, उसमें EDU 330 पढ़ाया जाता है, फायरवॉल नहीं पढ़ाया जाता, PCNSE नहीं पढ़ाया जाता है। उसमें ये पढ़ाया जाता है पैकेट कैप्चर कैसे करोगे, ठीक है, अंदर कैसे कैसे काम करोगे। तो ये मेरे पास ओरिजिनल नोट्स हैं फ्रॉम Palo Alto, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे टैक रेज होगा, ये सारा चीज। ये पूरा यार एक बड़ा कोर्स है, प्लस ये मेंटेनेंस ऑप्शन, मेंटेनेंस मोड, ठीक है, वो सब चीजें हैं, फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन, ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा।
ये क्या है, मैं लास्ट में कोर्स एंड के बाद 2 दिन का एक ट्रबल शूटिंग सेशन कंडक्ट करता हूँ, तो कभी वीकेंड पे कंडक्ट करके इसको कर लेंगे, ऐसा रहता है। ठीक है जी। और so this is about this course. Now let's move to the firewall again. Now let me show you few more feature of this firewall. If I go to device, go to setup, and let's say I want to make changes to the host name. So this is the general setting. Go to click on gear icon for to edit it. Now let me change host name. Let me make it UK firewall. Okay. Now this is your domain. Now let's say this firewall belongs to fcgo.com. Now this is my domain. You can set login manner. Okay. Warning. According to your requirement, you can set login manner. Okay. Now let me change the time zone as well. Asia, Calcutta. Here it is. Okay. Now let's say I've made 4 changes: host name, domain name, login banner, and time zone. Click OK. Let me make few more changes. Go to services. Under services, click on edit. Now this is your update server from where your firewall update itself. Okay. Now primary DNS server. Let's say this is my primary DNS server and secondary DNS server. You can change it from here. If you have any NTP server in your environment, you can configure primary NTP server IP address and secondary NTP server IP address from here. Click OK. You can see that there are 2 IPs now. Okay. Now, guys, commit option. You can see that this commit option, now it got highlighted. Click on commit. Now, commit is not very easy, guys. In case of firewall, it is not like your router. In router, we simply go ahead and click on commit. Simple. Okay, but in this firewall, not on this firewall, from firewall perspective, because this is a security device, whatever the changes you are making, we always need to review those changes. Okay, this is means commit option is very, I would say, whenever you are performing commit in live environment, even you need one L3 with you. This is what I say. If that's a big environment and it can impact lots of people, right? Because if something goes wrong, if firewall goes down, everything goes down. Okay, so this is the critical step. Okay, so you need to understand this step very importantly. Okay, so commit all changes. This is the one option. Commit changes made by this user. This is the second option. So if you select this option, let's say side by side and other user also making changes onto this firewall. So if you hit this button, so every change would be committed to this firewall. So let's select this option. Okay, now below you can see that you have preview changes option, change summary option, validate commit option. Okay, in description you can put change number, service request number, incident number, task number, whatever the ticket number, whatever the notes you want to put, you can put here. Okay, click on preview changes to see what changes going to be pushed in this firewall. Now line of context, select 20, click OK. As I told you, this is XML based firewall. That is why we are seeing this XML output. Okay,
You can see that if it is green, it means added. If it is orange, it means modify. If it is red, it means you have deleted something. I have a one question, Manish. मतलब एक Palo Alto इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल होती क्या, मतलब क्या क्या मैनेज करता है, क्या क्या देखता है टिकट इंसिडेंट पे वर्क की, मतलब क्या क्या प्रोफाइल में? Okay. In Palo, if you are a Palo Alto engineer, you will get almost each and everything. Let's say on day-to-day basis, if you are getting service requests, you need to create security policies. First thing. Security policies. Security policies. Yes, security policies, NAT policies. On the daily basis, you will get lots of ticket, and people are saying that please create a security policy for me to allow this application to connect with the internet. Maybe this, or maybe they have their own applications in a big environment. Okay. Decryption and all, we are going to configure it only one time. Okay. First thing is policy. Under objects, ये पॉलिसीज होती क्या है, मतलब ये क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड security policy. पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी हाँ, जैसे ACL होता है ना, डॉक्यूमेंटेड होती है? हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होती है. देखो, ओके so there are if you click on this security policy, these are two default security policy. This is intrazone ओके and this is interzone. Intrazone means different zone. Sorry, same zone. Intrazone means INTRA and this is INTER. So these two policy we have in this firewall by default. So if I click on this policy, this is read-only policy. You cannot even this delete button is also hide. I'll let you know what is the reason behind that. Okay, when I open this policy says this is the name of this policy. Interzone means same zone. The traffic from same zone would be allowed. If you go to action, it says action is allowed. Okay. मतलब इनिशियल लेवल पे आपको नैट पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज बनानी। देखो वो होता है L2 का प्रोफाइल, ओके L3 प्रोफाइल पे ये नहीं है, ठीक है। ये L2 के प्रोफाइल में होता है कि भाई ऐसा नहीं कि L3 की प्रोफाइल में नहीं होता है, L3 की प्रोफाइल में भी होता है, ठीक है। तो जनरली क्या है, पॉलिसीज बनानी है फुल, और इसके अलावा यहाँ मॉनिटर टैब में जाओगे आप, यहाँ पे ट्रैफिक लॉग्स हैं। let's suppose you got one incident, an incident user saying that this is my source IP 192.168.1.1, my destination IP is 8.8.8.8 and I am not able to communicate with the so and so server. Okay, in that case you are going to see the logs whether that traffic is allowed for that user or not. And one more thing, देखो क्या क्या ट्रबल शूट करोगे आप, यही ट्रबल शूट करोगे कि ट्रैफिक आ रहा है उस यूजर से, नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, पेज कभी कभी पेज डाउन की एरर्स आती है, इंटरफेस हाँ, साइड तो वो बैंडविड्थ सारे यूटिलाइजेशंस ऑल डाउन, करेक्ट, मेमोरी यूटिलाइजेशंस डाउन, सीपीयू यूटिलाइजेशन डाउन, हाँ। तो टिकट्स देखो जनरेट हो। यूजर क्या है, यूजर डायरेक्टली गोइंग टू क्या बोलूं मैं इसको, कि मतलब डायरेक्टली गोइंग टू ब्लेम ओनली फायरवॉल टीम दैट due to firewall my internet is not working. User directly say it to firewall team. Now you are a firewall engineer, you have to prove that my firewall is fine and everything is fine. कैसे प्रूव करोगे, आप लॉग्स का स्क्रीनशॉट भेजोगे उसे कि ये देख तेरे लॉग्स हमारे पास आ रहे हैं, it might be possible that that particular server is not reachable and the port is not open on that server. ठीक है, you can send the screenshot of the security policy. Okay, and you can ask few questions like, पूछ सकते हो उससे कि भाई आप एक यूजर इम्पैक्टेड है या मल्टीपल यूजर इम्पैक्टेड है, हाँ, सिंगल यूजर इंपैक्टेड और मल्टीपल यूजर। सिंपल। हाँ, अगर कोई ग्लोबल अगर एक वेबसाइट सिंगल है, यूजर इंपैक्टेड है दैट मींस ये हो सकता है कि उसके एंड पे दिक्कत हो, और मल्टीपल है दैट मींस कि हमारे एंड पे कुछ बिल्कुल। सो एज ए फायरवॉल इंजीनियर यू नीड टू provide them a proof that my firewall is working fine. दिक्कत।
ठीक वो है। लॉक्स बताते हैं ना, फायरवॉल टीम से मैं बात हाँ करता हूँ, तो बिल्कुल, वो लोग क्या करते हैं, लॉग्स लॉक्स दे बताते देंगे। हैं, लॉक्स का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो बोलते हैं, करेक्ट। एंड वो लॉक्स का केबी में है, एमबी में है, देखो आपका ट्रैफिक इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इट इज इन केबी साइज ओनली, सो देयर इज नो अटैक और देनी, नो लेटेंसी, नो सिंपल, ब्लॉकिंग, बिल्कुल। वही बोलते हैं। तो यार वही होता है, फायरवॉल बीच में है, फायरवॉल के एक साइड में इंटरनेट है या सर्वर्स हैं, हम्म, ठीक है, और लेफ्ट हम्म, साइड में क्लाइंट है। सिंपल है फॉर्मूला। हम्म, हम्म, बस या तो कोई सर्वर साइड से आपको कंप्लेन कर रहा होगा या फिर कोई क्लाइंट हम्म, साइड से कर रहा होगा। तो सर्वर साइड हम्म, एप्लीकेशन टीम्स, हाँ, डेवलपमेंट एप्लीकेशन टीम्स होती हैं, डेवलपमेंट टीम होती हैं, ये सब लोग हैं। बस तो ट्रबल सर्विसेज होती शूटिंग में, हाँ, आपको ट्रबल शूटिंग में यही प्रूफ करना है भाई। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी फायरवॉल कुछ ब्लॉक कर रही है, तो है। जाओ और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाओ उसकी। ओके, अच्छा, सिंपल, ठीक है। एक ये काम होता है, प्लस अगर ऑपरेशंस के बता रहा हूँ मैं तुम्हें ये, हम्म, इम्प्लीमेंटेशन प्रोस्पेक्टिव से नहीं बता रहा। ऑपरेशंस में और क्या होता है, आपके जैसे पैचेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं वो सब है। बाकी तो देखो, ये यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल में अगर लेट से आपको कोई यूजर रिक्वेस्ट आती है, वो बोलता है कि भाई ये पर्टिकुलर यूआरएल ब्लॉक करना है, तो आप वहाँ हम्म, पे ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, और ब्लॉकिंग शुरू हो जाएगी। ओके, यही सब रिक्वायरमेंट रहती है जनरली फ्रॉम फायरवॉल पर्सपेक्टिव। ओके। या तो मतलब इसमें है ही क्या ऑप्शंस, आप बताओ ना, फायरवॉल पे बैठ के और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है। हर एक बात ये होती है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या क्या होता है, लाइक बॉट अटैक हो रहा है या कोई हो रहा है, तो हम उसको बॉट ब्लॉक करना है, पर्टिकुलर आईपी ब्लॉक करना है। हाँ, तो वो हमें जो आगे ईटीएच जो एथिकल हैकिंग वाली टीम होगी वो देगी तुम्हें आईपी, ब्लॉक कर दो, पॉलिसी बनाओ सिक्योरिटी डिनाई की। तो बॉट आईपी का। सिंपल। इसके अलावा अटैक वाली सिचुएशन आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती। मॉनिटर टैब में जाओगे, यहाँ पे देखो थ्रेट, थ्रेट लॉग्स का एक टैब है और एक अलार्म का टैब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थ्रेट लॉग्स में ना आपको लॉग्स आते हुए दिखेंगे, एक आईपी से, फटाफट फटाफट बहुत सारे। और इधर जाओगे तो मैनेजमेंट और डेटा प्लेन सीपीयू आपका हाई चल रहा होगा, 100 को हिट कर रहा होगा, तो क्या लॉक करोगे। दैट मीन्स कि आपके पैकेट लॉस एक तरह से। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेट मी। पैकेट लॉस नहीं, जैसे अटैक सिचुएशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हाँ, अटैक सिचुएशन बता रहा हूँ। ओके, वैसे तो देखो ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं होता है, देखो एक चीज और बताता हूँ, इस फायरवॉल में एक अच्छी बात यह है, ऑब्जेक्ट्स में जाओ, यहाँ देखो रीजन्स हैं। अभी तो कोई रीजन नहीं कौन है, एक पॉलिसी बना के दिखाता हूँ, देखो ऐड पे क्लिक करो। आप क्या कर सकते हो, मान लो मैंने सोर्स किसको ऐड कर दिया, चाइना को। अब चाइना से कोई भी आने वाला ट्रैफिक जिसका डेस्टिनेशन क्या हो, मेरा मेरा इंटरनल नेटवर्क हो, ठीक है, डेस्टिनेशन एनी एड्रेस हो, सोर्स क्या है चाइना, डेस्टिनेशन क्या है मैं खुद, तो आप इसको अपना आईपी एड्रेस दोगे ना? हाँ दे देंगे। ठीक है, हाँ, मेरा जो भी लाइन होगा उसका आईपी देंगे, ठीक, तो एक्शन क्या ठीक कर है, दो, डिनाई। ठीक है। ठीक है, अभी वो क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने जोन्स नहीं बता रखे हैं यहाँ पे, ओके। मैं नहीं कर दो इसको। लेकिन अगर वो वीपीएन यूज करते हैं देन? उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं वही, अभी भी ओके, ओके, ये पढ़ेंगे ना हम, ये सब आईपीएस, हाँ, ये हाँ, छोड़ेगा नहीं किसी भी चीज को। ये फायरवॉल डीपर पैकेट इंस्पेक्शन कर रहा है। इट इज अच्छा, नॉट ओनली सीइंग सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, हाँ, डेस्टिनेशन हाँ, पोर्ट, हाँ, इट आल्सो सी what is inside that packet. So it is performing deeper packet inspection. बाहर से पैकेट का सोर्स आईपी देख करके डिसाइड नहीं करता, जो लेयर अच्छा, 4 फायरवॉल करता है। ये पूरा आईपी हेडर पड़ेगा, पूरा आईपी हेडर। आईपी हेडर। बिल्कुल, एक एग्जांपल अगर दूं तुम्हें सिंपल सा, तो हाँ, देखो पुराने जमाने में, पुराना जमाना तो क्या है, मतलब 2005 और 2008 की बात करूँ, तो facebook.com देखा था, क्या था उस हाँ, facebook.com पे, सिर्फ एक पेज था और एक चैट का ऑप्शन था, दैट्स इट, करेक्ट। हाँ, हाँ, बस, हाँ, आज की तारीख में फेसबुक पे क्या है, गूगल, सॉरी, यूट्यूब वीडियो देख लो, ग्रुप बना हाँ, लो, सारे के सारे बिजनेस आ गए। हाँ, बिजनेस के जितने भी कस्टमर केयर के चैट्स वैट्स ये वो सब आ गया। मतलब यूट्यूब फेसबुक पे क्या नहीं है, ये बताओ। गेम्स खेल सकते हो आप, ठीक है, चैटिंग कर हाँ, सकते हाँ, हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। हम्म, यहाँ पे क्या होता है, देखो इधर दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट्स में जाओ,
एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ पे टाइप करोगे ना अगर फेसबुक, फेसबुक चैट आप स्पेसिफिकली अलाउ कर सकते हो। फेसबुक फाइल शेयरिंग बंद करना चाहते हो आप बंद कर सकते हो। फेसबुक पोस्टिंग आप बंद करना चाहते हो बंद कर सकते हो। फेसबुक रूम्स बंद कर सकते हो, वीडियोस बंद कर सकते हो, वॉइस बंद कर सकते हो। ओके, मतलब ये आप एक रूट का सब ब्रांच है, इसमें क्या क्या आप यस, उसमें वो कर डिनाई यस। कर सकते फेसबुक मेल, हो। ओके। समझ में आ रही है? मतलब ये क्या कर रहा है, डीपर पैकेट इंस्पेक्शन। ये आपके पैकेट के अंदर जाके देखेगा कि ये बिट टॉरेंट का ट्रैफिक है, या फेसबुक चैट का ट्रैफिक है, या एप्लीकेशन का ट्रैफिक है फेसबुक का, या वीडियो का ट्रैफिक है। मतलब मेरा जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये चीज है कि भले आप आईपी जंप करा दो लेकिन हेडर तो सेम रहेगा। देखो आईपी हेडर को तो स्कैन करेगा ही करेगा ये। हाँ हाँ अगर तुमने वीपीएन यूज करा हाँ और आईपी हेडर चेंज कर दिया, क्योंकि वो तो हाँ कहीं और जा रहा है हाँ हाँ। ना, आईपी हेडर चेंज हो गया, बट जो पैकेट के अंदर डेटा है उसको उसके अंदर जाके देखेगा ये कि अंदर क्या कंटेंट भेज रहे हो आप इसके अंदर। अच्छा अच्छा अब अच्छा। कंटेंट आपका अगर चैट का है और चैट आपने ब्लॉक करी हुई है फेसबुक के यहाँ पे, हाँ तो वो हाँ हाँ। डिनाई हो जाएगा पैकेट। मैं अच्छा, बोल वो रहा हूँ डीपर स्कैनिंग होती है कि लेयर मतलब। 7 तक, हाँ लेयर 7 अच्छा तक स्कैनिंग है ओके पूरी। ओके। डेटा पैकेट कहाँ बन रहा है, लेयर ऊपर के ऊपर 3 लेयर पे हाँ यार। हाँ 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 तो तीनों लेयर स्कैन हो रही हैं अब की बार, हाँ। तो कोई चांस नहीं है। प्लस दुनिया का ऐसा कोई पैकेट नहीं बना जो ये फायरवॉल डिक्रिप्ट ना कर पाए। डिक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, डिक्रिप्शन की। ओके। डिक्रिप्शन, हर पैकेट डिक्रिप्ट हो सकता है इस फायरवॉल से। नेट बैंकिंग अगर आप यूज कर रहे हो XYZ बैंक की, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से भेज रहे हो ना जो सिक्योर जा रही है SSL और TLS से, ये हम्म। फायरवॉल डिक्रिप्ट करने के लिए कैपेबल है। अच्छा। हम्म। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैपेबिलिटीज हैं। ओके। ठीक है, हालांकि इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। इंडिया में ये चीज इलीगल है। बाकी अदर कंट्रीज में जैसे यूएस वगैरह में जाओगे तो वहां पे हर एक फायरवॉल डिक्रिप्शन लगा हुआ मिलेगा आपको, वहां पे डिक्रिप्ट कर रहे हैं। क्योंकि कल को आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, मैं फायरवॉल इंजीनियर हूँ SBI हाँ बैंक के अंदर जाके, तो मैं डिक्रिप्शन करके इधर देख लूंगा, इधर डेटा में क्यों नहीं दिखेगा मुझे। कैप्चर वायरशार्क चला लेता हूँ, हाँ। कैप्चर करके तुम्हारे यूजर नेम एंड पासवर्ड मैं निकाल सकता हूँ आराम से, पूरी इन्फॉर्मेशन दिखती है। कैप्चर का ऑप्शन भी है, देखो इसके अंदर मॉनिटर टैब में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में पैकेट कैप्चर का ऑप्शन है, इसमें जाओ और यहाँ पे ऐड में जाके सोर्स और डेस्टिनेशन दे दो। यहाँ पे सॉरी, मैनेज फिल्टर में जाके ये रहा, सोर्स डेस्टिनेशन बता दो। सोर्स, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के बीच में जो भी पैकेट जा रहा होगा उसको कैप्चर कर लेगी फायरवॉल, और एक पीकेएफ फाइल बना देगी। उस पीकेएफ फाइल को वायरशार्क में ओपन कर लो। ठीक है, तो चीजें बहुत हैं, तो एडवांस ये है वायर फायरवॉल। वायर शार्क लॉग एनालिसिस के लिए काम करता है क्या? मतलब उसका लॉग इसमें पेस्ट हाँ, करने के बाद अपन हाँ। सर्चिंग में प्रॉपरली कर सकते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि यूजर बोलता है कि नहीं भाई, हम आपके ट्रैफिक लॉग्स को नहीं मानते, तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि भाई आजा सिस्टम पे और लाइव ट्रैफिक जनरेट कर, हम यहाँ पे बैठ के पैकेट कैप्चर करेंगे फायरवॉल पे। पैकेट कैप्चर करेंगे वायर शार्क में, उसे दिखा दो कि देख तेरा सोर्स और डेस्टिनेशन से रिप्लाई आ रहा है। यूजर दैट मीन वेंडर। हाँ, वो तुम पता ही है, अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा, होता ही है ये चीज यही कई होता है, बार। हाँ हाँ, होता मानते है हैं होता है। इसकी कैसी है। हाँ, तो मानते उसको नहीं है वो लोग। तो कैसे अंडरस्टैंड करोगे, ये लास्ट ऑप्शन है पैकेट कैप्चर। फिर उससे पैकेट कैप्चर दिखा दो भाई कि अब तो मानना ही पड़ेगा, अब तो भगवान भी आ जाए नीचे तब भी। मतलब फायरवॉल अब खुद कह रही है हम्म। पैकेट कैप्चर, टैग वाला भी आके पैकेट कैप्चर ही दिखाएगा, कुछ नहीं होता उसमें। सर ये जैसे सेशन काउंट है 1 to 4 8, अगर ये फुल हो जाता है तो सीपीयू हाई हो जाता है, राइट? नहीं, उसके बाद ये नए सेशन नहीं बनाएगा, टीसीपी ओके। सेशन नए नहीं बनाएगा, ये टीसीपी सेशन का काउंट है। ये अगर इतना जैसे होता नहीं है वैसे। सीपीयू हाई हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या बेसिक ट्रबल शूटिंग करते हैं? बताओ भाई, इतने सारे लोग हैं, बताओ यार, अब ये वाले सवाल छोटे क्या वाले। है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है? मैंने सुना नहीं। सीपीयू हाई हो जाता है तो हम्म। उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या कर सकते हो आप?
देखो कनेक्शंस, देखो एप्लीकेशन सर्विसेज क्या क्या रन हो रहे हैं, पैकेट कैप्चर तो हम कर रहे हैं, तो उस पे क्या क्या रन हो रहा है। जनरल टर्म से पूछोगे तो टास्क मैनेजर पे आप जाके वो चीज कर सकते हो कि एप्लीकेशन जो चल रही है वो कुछ मैनेजर होती है फायरवॉल हाँ का। कुछ ऐसी एप्लीकेशन चल रही है जो जनरली यूज में नहीं है हमको, तो उसको एंड कर दो। किल कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ अगर सारी यूज में होंगी तो सारी यूज में होंगी तो फिर ठीक है, हमारे फायरवॉल की यही लिमिट है भाई, क्या करें, फायरवॉल हाँ अपग्रेड करो। नहीं कर सकते ना, फिर वही पूछ रहा हूँ। रैम फिर बढ़ा दो नहीं, का। देखो यार, फायरवॉल का तो रैम नहीं बढ़ेगा, लेकिन Yes. उसके लिए आपको फिर वही है, आपको अपनी कंपनी को सजेस्ट करना पड़ेगा सर, क्योंकि हाई आपका कैपेसिटी फायरवॉल हाई लगेंगे। कैपेसिटी फायरवॉल की जरूरत है थ्रू आउटपुट अगर ज्यादा चाहिए तो आपको, अदरवाइज आपको ये सिचुएशन अच्छा, फेस ये करनी पड़ेगी। कैपेसिटी की बात आई है, तो ये इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, ये 9 का वर्जन जो है, इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? अरे ये तो सिर्फ ओएस का वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, इट डजंट हाँ, मैटर। कैपेसिटी कितनी रहती है इसकी, बता सकते हो? यस, paloaltonetwork.com पे जाओ, सेशन रहते हैं ना एज पर डिवाइस। प्रोडक्ट्स में। नहीं, 65 इस सेशन को भूल जाओ यार, ये वर्चुअल नहीं, फायरवॉल है। ये नहीं 65,000 समथिंग नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा है इसकी तो। देखो, प्रोडक्ट्स पे आ जाओ, डिवाइस। हाँ, हार्डवेयर प्रोडक्ट। फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल्स पे आ जाओ। मतलब कैपेसिटी कैसे काउंट होती है, मतलब इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को जो कितना कर सकता है ये फायरवॉल, बता रहा ऐसा? हूँ, इधर देखो, अच्छा, सबसे छोटा फायरवॉल है Palo Alto 220, इस पे क्लिक करो, रीड डेटा शीट पे। मतलब ये कितना डाइवर्जन कर सकता है? इधर देखो, इधर देखो, इसका आर्किटेक्चर समझाऊंगा मैं, देखता हूँ, कल कल आर्किटेक्चर ले लेंगे। तो देखो यार, ये फायरवॉल का थ्रू आउटपुट है, ये सबसे छोटा फायरवॉल है Palo Alto का। फायरवॉल थ्रू आउटपुट एसटीटीपी का 545 से 535 Mbps। मैक्सिमम सेशन कितने क्रिएट्स कर सकता है एक सेकंड में? 64,000। न्यू सेशन इन 1 सेकंड, इट कैन क्रिएट 40 to 100 न्यू सेशंस इन पर सेकंड। समझ आ रही है? तो जो तुम कह रहे हो ना, वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो ऐसा इसलिए भी तो मैंने हम कर बोला। सकते हैं कि हम मल्टीपल, मतलब अगर इस सेशन खत्म हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ये दूसरे उससे फायरवॉल से कनेक्ट कर देगा, राउट कर देगा, दूसरे को डाइवर्ट कर देगा, तो वही हो मल्टीपल सकता है। वही हाँ, हो ही सकता है और क्या। वही होगा फिर, या तो फायरवॉल अपग्रेड कर लो, या फिर आपके पास दो फायरवॉल हैं तो फिर एक्टिव एक्टिव सिनेरियो बना लो, ऐसे तो हाँ चल ही हाँ रहा हाँ, है। कि जब भी ये सेशन फुल हो जाए तो ये कन्वर्ट टू द सेकंड। सिंपल। हाँ, हाँ, डाइवर्ट टू द सेकंड, लोड शेयरिंग करना है। लोड करेक्ट। शेयरिंग कर दो, यही यस, करो। दिस इज व्हाट वी कैन डू। मतलब यही सिंपल से जो सॉल्यूशंस हैं वो यही हैं। सोल्यूशन यही होता है, लोड शेयरिंग, इसी को वही तो होता ही है एक सोल्यूशन, शेयरिंग कर देना लोड। देखो, प्लस हार्डवेयर आर्किटेक्चर की बात करूं अगर, Palo Alto का ये सबसे छोटा फायरवॉल है PA220। तो PA220 पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऊपर कंट्रोल प्लेन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला कंट्रोल प्लेन को डेडिकेटेड रैम और डेडिकेटेड स्टोरेज एंड डेडिकेटेड सीपीयू दे रखा है। डेटा प्लेन को डेडिकेटेड रैम, डेडिकेटेड सीपीयू है। अच्छा, इसमें उनको प्रॉपर रैम दे रखे हैं इन लोगों ने? यस, इसलिए स्टोरेज? आपके पास यहाँ पे दो आ रहे हैं, दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, दो ओके। सीपीयू आ रहे हैं इसलिए। सिंपल, ये अरे सबसे मैं छोटा आपके फायरवॉल screen बता रहा हूँ। I lost your screen, Manish. हम्म। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर देखो, No, no. If you are sharing your screen, I'm not able to see your screen. ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। ओके, हाँ, अभी share. Okay. तो डेटा प्लेन के लिए डेडिकेटेड रैम एंड सीपीयूज हैं यहाँ पे। और अगर एक बड़े फायरवॉल की बात करेंगे तो लेट्स से 5450 पे आ जाओ। ये 5450 है क्या? हाँ, इसमें दो SSD हैं, देखो, सीपीयू इंक्रीज हो गया 16 कोर। तो रैम इसमें कितनी दिए हुए हैं? रैम यार ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ अच्छा, है। रैम ज्यादा है, देखो ये रहा, नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए है, जो सिर्फ फ्लो कंट्रोल राउट लुकअप करेगा, मैक लुकअप करेगा, नैट करेगा, उसको डेडिकेटेड रैम है। फॉर सिक्योरिटी प्रोसेसिंग वी हैव डेडिकेटेड रैम 16 कोर CPU,
मतलब हार्डवेयर भी इंक्रीज हो गया, मॉडल इंक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली डाउन। डेटा शीट देखनी है तो डेटा शीट देखो। ये आते जनरली कितने के हैं, मतलब जस्ट जनरल आस्क ये सब, व्हाट वो आर द यार प्राइस? 220 भी शायद लैक्स में होगा अच्छा, सबसे छोटा, बड़े का तो मुझे नहीं पता। देखो इसका आउटपुट इन GBps 200 GBps, मैक्स सेशन 100 मिलियन, 20 मिलियन Oh, न्यू 200 सेशंस। Gbps. हाँ, Okay. दिस इज डेटा सेंटर फायरवॉल। हम्म 55450 इज अ डेटा सेंटर फायरवॉल। तभी इतना ज्यादा? हाँ, तभी इतना ज्यादा है इसमें। हम्म। ठीक है। तो बहुत सारे कनेक्शंस प्रोसेस होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस यस कनेक्ट, यस, बहुत आप बड़ा ब्रांच होगा। ब्रांच कनेक्ट कर रहे हो यार। हम्म, ब्रांच कनेक्ट करोगे आप 500 1000, तो फिर आपको डेटा सेंटर में भी तो तगड़ा फायरवॉल चाहिए। कैसे हैंडल करेगा वो? 7000 वाला तो इसका बहुत ही ऊपर है। इसको देखो, इसमें देखो डेडिकेटेड CPU दे रखा है 48 कोर का। 48 कोर के 3 CPUs ओनली फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसेसिंग, फॉर नेटवर्क प्रोसेसिंग, डेडिकेटेड रैम CPU, FPGA। ओके। अच्छा, और एक डाउट था इसमें, AI/ML भी इंटीग्रेट किया है क्या? अभी अभी कहीं तो देखा मैंने ML बेस्ड बोल के, तो शायद, आई एम नॉट श्योर, चेक करना पड़ेगा मुझे। अगर किया है तो डेफिनेटली किया ही होगा, अगर तुमने सुना है। और अगर वेबसाइट पे चेक किया कभी? नहीं, अभी कॉलेज। देखा मैंने, अभी देखा ML बेस्ड बोल के, अभी आपने हाँ, जो सर्फिंग कर रहे हो तो आई सा योर स्क्रीन एंड इन दैट आई रेड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ML based in the sense it process so many things by itself like chatbot. हाँ, ये सब कह सकते हो ऐसा। Which are regular things. बिल्कुल हो सकता है ऑटोमेटेड, बिल्कुल हो सकता है जी, ऑटोमेशन का जमाना है। तो देखो यार, ये आपका 7000 सीरीज फायरवॉल है। 7000 में 4 मॉडल आते हैं, 7050, 7080, 7000 DPC-A, NPCA। तो इसका तो देखो 6 मिलियन तक है। Wow. 6 मिलियन न्यू कनेक्शंस, न्यू सेशंस, और 460 मिलियन maximum session limit. And this is your through output in GBps. ठीक है। Okay then guys, see you tomorrow. Okay, tomorrow we'll take one more session. Okay, and we'll discuss about hardware architecture. Not hardware architecture means this Palo Alto firewall has SP3 architecture, single pass parallel processing. We'll talk about that architecture, how this architecture is working, and how this is unique than others. ML powered visibility across IoT and other connectivity. हाँ, ये देखा था मैंने शायद। PCNSC का INR में मतलब 14,000 है, मतलब सर्टिफिकेशन हाँ, कॉस्ट। $175 को कन्वर्ट कर लो, जो भी फीस आ वो रहा होगा 14 आ रही है, वही। हाँ 14 आ रही है। हाँ, हाँ, तो वो तो उस टाइम जो भी आ रहा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से उतना वो हो जाएगा okay. डिडक्ट। और फायरवॉल्स के अंदर ना, मैंने सारी फायरवॉल पे काम किया है ऑलमोस्ट, बट ये सबसे इजी फायरवॉल है, सच बता रहा हूँ। FortiGate से भी ज्यादा इजी मेरे को ये लगती है, और इजी भी है। FortiGate में और Palo Alto में एक यही डिफरेंस है, FortiGate में क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, 3 या 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बट इन केस ऑफ Palo Alto थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन अच्छा है, स्पेसिफिक है। प्लस देखो, टॉप नॉच फायरवॉल है ये मार्केट में, लीडर है लास्ट कितने सालों से है। आपका ये रिपोर्ट आती है ना इसकी, हम भूल गया मैं इसका, गार्टनर। गार्टनर की जो रिपोर्ट आती है, हाँ, उसमें
आप लास्ट 5-7 ईयर्स के देखोगे तो नंबर 1 पे पालो अल्टो को कोई बीट नहीं कर रहा फिलहाल अभी तक तो। फिर बाकी उसके नीचे सिस्को, जो भी अदर वेंडर्स हैं वो सब आ जाते हैं फिर। सिस्को, फोर्टीगेट, वो फायर पावर एंड ऑल। तो एक छोटा डाउट आ गया, तो हाँ। बड़े बड़े सिनेरियोस रहते हैं, मतलब बड़े बड़े बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो फायरवॉल्स होते हैं, दे यूज हार्डवेयर फायरवॉल और दे यूज वर्चुअल फायरवॉल आल्सो ऑन द क्लाउड? ओनली हार्डवेयर फायरवॉल। Okay, so who uses cloud firewalls then? ओके, सो हु यूजेस क्लाउड फायरवॉल का आंसर ये है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी आज के, देखो आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो होस्ट कर रही हैं क्लाउड पे और AWS पे। हमारे यहाँ पे जो सेटअप था, मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, वहाँ पे सारा सेटअप अज्योर का है। अज्योर पे उन्होंने क्या कर रखा है, एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है बहुत सारी, बहुत सारी। मैं एक्चुअली पेप्सी के प्रोजेक्ट में हूँ, तो बहुत सारी एप्लीकेशन होस्टेड है क्लाउड पे। वहां पे उस केस में हमने क्लाउड फायरवॉल लगा रखी है, एक भी नहीं मल्टीपल फायरवॉल्स हैं। और उससे उससे पहले हमारा लगा हुआ है एक ऐप गेटवे प्लस, जो जितने भी उसके यूजर्स हैं वो मोस्टली इंटरनेट पे हैं। समझ तो आई? फर्क क्या तो होता है फायरवॉल में और एक हार्डवेयर फायरवॉल में? फर्क क्या होता है? कोई फर्क नहीं हुआ, कोई सेम काम करता है कंप्लीट ऑलमोस्ट सेम, 100%? बिल्कुल जी। देखो छोटे छोटे फायरवॉल मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैक्सिमम 3000 सीरीज तक वर्चुअल फायरवॉल देखा, ठीक है। बाकी मोस्टली जैसे 5000 सीरीज दिखाया मैंने अभी, 7000 सीरीज, ये सब हार्डवेयर फायरवॉल ही प्रेफर करते हैं डेटा सेंटर के अंदर। वर्चुअल फायरवॉल में मैंने नहीं देखा, क्योंकि एप्लीकेशन चलती हैं, एप्लीकेशन लाइट वेटेड है ऑलरेडी, उनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चाहे तुम इसको देख लो चाहे किसी को भी देख लो, एसडीएमएन आने के बाद भी बड़ी कोई बड़ी कोई कंपनी। कंपनी अफोर्ड कर नहीं पाती, हार्डवेयर पार्ट तो अफोर्ड कर नहीं पाती है, तो वो लोग क्लाउड पे खरीद लेके काम चला ले सकती है बोल के। चलाओ यार, वो देखो छोटी कंपनियां ही मूव हुई हैं आज तक। आप ये बता दो कि क्या इंडिया के अंदर जियो, वोडाफोन ऐसे वेंडर हैं, ये सब क्लाउड पे गए? हार्डवेयर क्यों यूज कर रहे हैं बताओ? हार्डवेयर हार्डवेयर ही है। उसको वर्चुअलाइज कर देना फिर, वो सब कुछ क्लाउड पे डाल दे। हाँ, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। हार्डवेयर तो हार्डवेयर ही रहेगा, ठीक है। नहीं, तो मेरा क्लाउड में भी सेम बैकग्राउंड होता है डाउट ये जैसे। था, हाँ, मेरा बैकग्राउंड डाउट ये था कि इसकी प्रोसेसिंग में और जो जनरल प्रोसेसिंग रहती है, जनरल हाँ, कंप्यूटर की ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग। सेम। 19-20 का डिफरेंस दिखेगा, ज्यादा नहीं, माइनर मतलब जो डिफरेंस होता है। जो जो हार्डवेयर लगता है कंप्यूटर के प्रोसेसर में और जो इसमें जो हार्डवेयर लगता है ऑलमोस्ट सेम। ओके। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, तो मैं वर्चुअल फायरवॉल भी मैनेज करता हूं अपनी कंपनी में, और ये भी करता हूं। तो वर्चुअल फायरवॉल ना लोड होने में बड़ी टाइम लगता है उसके अंदर। ये जैसे हाँ, तो डैशबोर्ड खुल रहा है ना, तो आजकल ये भी हो धीरे रहा है धीरे ना। खुलेगा। सही है, तो हाँ। आप ऑक्सिलरी पोर्ट से यहाँ पे लोड कर रहे हो एंड इट इज लोडिंग फ्रॉम समवेयर, सम रीजन। बिल्कुल। तो हम जैसे एज्योर वगैरह कर लेते हैं, तो यार ये वाला एक्सपीरियंस, मतलब इवन अच्छा इंटरनेट स्पीड है आपके पास तब भी। लीज लाइन पे बता रहा हूँ मैं, ऑफिस में जाके वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के बाद भी बता रहा हूँ मैं, जब आप प्रॉपरली ऑफिस के लैन से कनेक्टेड हो, तब भी वो प्रॉब्लम फेस होती है। क्लाउड से ये डाउनलोड करने में टेक्स सम मोर टाइम अदर देन हाँ, हार्डवेयर। वो तो देखो होता ही है, हार्डवेयर तो देखो हार्डवेयर ही है। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। प्लग एंड प्ले, प्लग इन एंड यस, बिल्कुल। Yeah. चलो गाइस, देन सी यू टुमारो, ठीक है, सर, सेवन सर एक 30 क्वेश्चन था। हाँ हेलो बताओ। हाँ बताओ। सर, ये जैसे कि कल हमारी ये लास्ट क्लास हुई, तो कोई हमारी इसके बाद सर डीप क्लासेस होंगी, मतलब पेड बेसिस जिसमें हम ऑल फीचर्स पढ़े सारी चीजें, क्योंकि सर इसमें तो हम हाँ जनरल देखो यार, आर्किटेक्चर या जी डैशबोर्ड बस सीख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल। देखो उसमें ना फिर ये वाला जो मैंने सिलेबस दे रखा है ना, ये सिलेबस पूरा कवर होगा, पूरा का पूरा। तो जितने लोग ज्वाइन करेंगे वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम तो चलते ही रहते हैं। ऐसे मेरा तो बैच मतलब ऑलमोस्ट महीने में एक दो ऐसे बनते ही रहते हैं। जैसे अब बन गया, अब थोड़ा सा जैसे ही मेरे को फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक बैच बना लेता हूँ और इसको रिपीट करते रहते हैं, इस तरह से हाँ, तो वही वही सर, तो इसी ग्रुप पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब उस बैच की, ये हमारा जो हाँ, अभी इस ग्रुप पे मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। मैं उसमें मैसेज ड्रॉप कर दूंगा भैया,
एंड ये बैच जो है कब से स्टार्ट होने वाला है? यार मंडे से ही कर लेंगे, कल संडे है ना, कल संडे को एक क्लास लेंगे, ठीक है, उसके बाद मंडे से अपना कंटिन्यू कर मतलब लेंगे। मेरे कंप्यूटर पे अभी एक ऑफिस का लैपटॉप है, इस पे कुछ कर नहीं सकते नखरे, ठीक है। तो घर पे जाना पड़ेगा वो सब। सर फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है इसका और ड्यूरेशन?